One thought that the nation's outcry for justice would mean real help would reach this 14-year-old. That was not to be. Exactly a month ago, we hung our heads in shame when this CCTV footage came out. A minor, semi-naked and bleeding after rape, going door to door asking for help. People stared at her, but refused to extend a helping hand. One man was seen shooing her away as she approached him. The visuals, which no longer shock a society where violence against women and minors has become chillingly common, were captured by a CCTV camera at Badnagar Road, about 15 kilometers from Ujjain in Madhya Pradesh. What happened after that? Promises poured in. Politicians said a home will be given to the rape survivor. Financial help will be given to her as well. But what happens when the spotlight moves away? We decided to meet the girl after she was discharged from the hospital. Exactly 1 month back, these images shook the nation's conscience. An auto rickshaw driver allegedly brutally raped her. Then she was seen half naked, her clothes soaked in blood, pleading for help on the streets of Ujjain. But everyone turned a blind eye. A priest at an ashram took her to the police and then to the hospital. The accused was promptly nabbed and the Shivraj Singh government made tall promises. Life went on. उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे। Festivals were celebrated, the state went into election frenzy. On the 12th of October, she was discharged and she returned home. Few days later, NDTV went on to check on how she was doing in her village near Satna. We found the scared rape survivor in fear in a hut. The smoke from a smoldering stove, the condition of her house tell a tale of complete apathy. A month ago, she was struggling between life and death. Today, she fetches water with her aunt, walking 300 meters from the house. वापस आने के बाद यहाँ के जो जिला प्रशासन है, इससे कुछ लोग मिलने आए आपके पास में अभी तक? हाँ, तो जिला उला के कोई नहीं आया मेरे पास। किसी प्रकार की कोई योजना आय का क्या साधन है आपका? आय का कैसे, मतलब परिवार कैसे चलाते हैं आप लोग? हो गया है धंधा, अपन खवाएं पियाएं न चाहिए का बेचे नहीं से खाएं। किनसे? बकरी से। बकरी को चराने से? हाँ। अच्छा, इसको चलाकर जो है इसे दूध बेचते हैं? दूध बेचे नहीं हुई, बच्चा पिला दिए। The family says that this hand pump is a symbol of untouchability in the village. The rape survivor belongs to the Dohar community, a scheduled caste. Her brother alleges that the village sarpanch and the administration do nothing for them because they are from a lower caste. There are about 700 voters in the village, half of whom are from upper caste, the other half are Dalit. हम नहीं चाहते हैं सर, हमारे अभी कोई बड़ी जाति के होता सर तो सर पूरा जिला के लोग वो होते, हमारे छोट जाति के हैं तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। Statistics shows that the crime against Dalits in Madhya Pradesh are higher than the national average. 50,900 incidents of crime against scheduled caste were reported in the country in 2021. In Madhya Pradesh, this figure was 7,211. The crime rate against scheduled caste in the country in 2021 was 25.3%, while in Madhya Pradesh it was 63.6%. Neighbors says the maximum help the family got after returning home was rupees 1,500 from a BJP candidate. अभी तक तो सर यहाँ सरकार कोई योजना नहीं दे रही है। हालत वही उज्जैन वाली दवा गोली उसकी चल रही है। अभी स्थिति उसकी ठीक है, बोलने चालने लगी है। अभी तो कोई नहीं आए सर, एक घरवाल साहब आए थे जी, जानकारी उनको मिली है तो आए हैं उसके घर, मिले हैं उसके बाप से, उज्जैन में उसकी लड़की थी। बस इतनी जानकारी है सर मेरे को, और बाकी शासन प्रशासन कोई लाभ उसको अभी तक नहीं मिला। जानकारी तो है लेकिन अभी तक उसको कोई अभी लाभ नहीं मिला है। लेकिन अभी सुरेंद्र सिंह गहवाल जी आए थे तो उसके लड़के को 1500 रुपए दे के गए थे, थोड़ा बहुत ये सब्जी भाजी के लिए, और मेरे को कोई जानकारी नहीं। शासन प्रशासन से कोई भी नहीं आया? ना कोई नहीं आया। We asked the government about this apathy. The response: ये हमारी जिंदगी का मिशन है, बेटी और बहन
का आदर और सम्मान करना और उनका सशक्तिकरण। भाई साहब कितनी सीटें उज्जैन में? कितनी सीटें? The family claimed that the only help they get from the government is a social justice pension of rupees 600 per month. Ladli Lakshmi, Ladli Behna, Nari Samman Women Reservation. Every party is making dozens of promises in the name of women, but the reality becomes clearer as soon as you reach to the Ujjain Rape Survivors House in Satna. In Satna with camera person Rizwan Khan, Gyan Shukla and Mayank Dubey, Anurag Dwari for NDTV. We have Gudiya's uncle joining us. Remember, Gudiya, a 5-year-old, was raped in 2013 in Delhi. Seema Kushwaha is Nirbhaya's lawyer. Abha Singh is an advocate and social activist. Yashwardhan Azad, former IPS officer. Yashwardhan Azad, you were on this show when we spoke about failures at multiple levels while discussing the Ujjain episode. Incident, scary incident. We sought explanations from cops. Why no arrest, we had asked. But look at this little minor. 1 month after that, she has survived. But when it comes to real help, rehabilitation, who's to be held answerable? Well, I think the state has a lot to answer in this particular case. It's a shocking incident, and I appreciate very much NDTV carrying out this program at this time, because most of the channels are only concerned in blowing up the atrocities. But what happens afterwards, whether the words of those netas have been implemented or not, is the first time I have seen perhaps a careful study of what exactly happens in the aftermath. You know, there are a slew of measures which could have been done. There are a host of programs which could be done in the name of Nari Samman, Nari Shakti, Ladli Yojana. There are so many. What fails my imagination, and I'm really deeply shocked that for an incident of this kind, here was a model case which the state government could have developed. It could have become a model village. It could have become a model home. It could have become a model woman who, after so much of tragedy, has risen above the ashes. Yes. You know, a good education. So many things could have been done. And therefore, it's unfortunate. I heard those words of the chief minister. He's a good man. But unfortunately, the implementation is so poor that the mind cries out for these such victims. Yes, and I'm indeed it's very shocked heartbreaking to see. You know, Yashwardhan Azad, it's heartbreaking to look at the dynamics of that village also, Abha Singh, where, as the reporter was pointing out, that Sarpanch and administration is not doing anything because there is that caste factor which is at play. So this is the truth. This is the reality of what happens when the spotlight moves away, when all the outrage is over and the society goes back to their normal lives. But for this little girl and her family, the life has changed forever. Marya, you're very right. As long as the media gaze is there, people come, politicians come, police officers come, and they say, make tall promises. Because here in this case, if we see, they said the families just received 1,500 rupees. Supreme Court time and again has clearly said that in case of a rape, minimum compensation of 4 lakhs should be given immediately. If it's a gang rape, then it is 5 lakhs. Up to 10 lakhs is to be given. Here, the families not even got the some money so that they could let this girl do something what she wants to do, some counseling, some therapy. Instead of that, you're showing that she's going to collect water. I mean, if this is the way we are going to treat our girls, then what is talk of Beti Bachao, Beti Padhao? You know, in fact, when all this you were showing on the television earlier, nobody responded to this girl. And I'm aghast that what is the kind of investigation which is done. So many of these cases which are handled at the court, conviction in rape cases is barely 28 to 29%. Because the investigation is so poor, the forensic saving is so bad that I'm sure that in Satna they have not even collected the forensics in the right way. And so this person who's raped her, there are 100% chances he may go scot-free because conviction is barely 28%. So political apathy, police negligence and the public apathy. All this has put us in a and real they're bad forgotten. spot. Yes, This child has been forgotten.
Just a month Exactly, ago, this girl, all of us were this girl concerned about her, and today she is forgotten. And imagine that she has survived that brutal rape. And The trauma. Yes, the trauma. The trauma. In fact, right now she should have been going some therapy, counseling, so that at least her mental health improves. But I don't think she's been even provided that, because there's nobody seen there. So that for anybody's all those taking care. politicians who spoke about it at that time, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्या किया आपने? वही सवाल है. और इसलिए let me ask Gudiya's uncle. जब घटना हुई थी तो उस वक्त आपको भी बहुत सारे promises किए गए होंगे. 10 साल हो गया. देखिए मैम, जब घटना कोई होती है तो सामने नेताजी अपना फोटो दिखाने आ जाएंगे. हमें ऐसा लगता है हमारे देश के नेता ही सबसे गलत है. जो क्राइम करता है वो नेता के अमचा चमचा होता है, उनकी सपोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन विक्टिम के सपोर्ट में कोई नहीं जाता है. मैं अभी ऐसे कई केसेस में रिपोर्ट लिखाने गया हूँ जहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती है, धमका के भगा दिया जाता है थाने में से ही. आप देहातों में जाइएगा, लगभग ऐसे बहुत सारे केस होंगे जहाँ पुलिस वाले उन्हें केस लिखते ही नहीं है, भगा देते हैं थाने में से, जाओ तुम्हें ऐसी हो गया, कुछ नहीं होता है इसमें. मैं देखा हूँ, खुद जाके थाने में होके आया हूँ मैं, और लगभग 50% से ज़्यादा केस दर्ज होता ही नहीं है. कहीं जाति के नाम पे, कहीं पैसे देकर वैसे ही बंद करवा देते हैं केस को. क्या करोगे आप? इंसाफ कहाँ मिलेगा इनको? जी, जब 2013 में ये जो घटना घटी, उसके बाद अभी बच्ची कैसी है? क्या स्कूल जा रही है? और उस वक्त क्या कौन कौन मदद करने के लिए आए थे? जब घटना हुई थी उस टाइम बच्ची तो बहुत छोटी थी, फर्स्ट में पढ़ रही थी. जब अभी वो पढ़ रही है, ठीक है अभी, लेकिन उसकी 6 सर्जरी हो चुकी है. उस बच्ची की 6 सर्जरी हो रही है. आप सोच सकते हैं कैसी होगी वो. जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही है उसे महसूस होता है, हालांकि कोई बातचीत नहीं होती है, लेकिन उसे जब अनुभव होगा, पता लगेगा, हम उसके सामने कैसे बात करेंगे. आप ज़रा सोच के देखिएगा. और उस टाइम मदद के लिए तो बहुत लोग आए थे. आपने उस टाइम ऐसा शायद कोई बड़ा नेता नहीं होगा जो नहीं आए थे मिलने के लिए, लेकिन हकीकत में कौन सामने हेल्प कर रहा है? जो नहीं है, सामने में कोई नहीं आता. जब कैमरा आपका ऑन होगा तो सामने में बोलने सब आ जाएंगे, बाद में कोई नहीं मिलेगा आपको. ये तो कैमरे की बात हुई सीमा, यही आपके साथ भी हुआ. फास्ट ट्रैक जस्टिस की बात होती रही इतना साल, लेकिन इंसाफ कब मिला? 10 साल के बाद? उससे भी लंबा वक्फा लगा? 7 साल 3 महीने निर्भया केस की अगर हम बात करें, 7 ईयर 3 months. इवन की गुड़िया के फादर को मैं सुन रही थी अभी, मैम इस केस में 20 ईयर का पनिशमेंट है. 5 साल की बच्ची जिसके साथ रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में सीसीओ को तोड़ा गया था. ये केस मुझे याद है बहुत अच्छे से, और बेटी वो एम्स में एडमिट थी. 20 ईयर्स ओनली पनिशमेंट है. अब ये देखना है कि वहां लैकिंग क्या थी एविडेंसेस की, जबकि पोक्सो एक्ट में क्लियर कट ये मेंशन है कि अगर 10-12 ईयर्स से कम के बच्चे हैं और वो पोक्सो एक्ट अगर लगा हुआ है तो उसमें डेफिनेटली डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है. 2 महीने का टाइम पीरियड है चार्जशीट फाइल करने का. पोक्सो एक्ट की मैं बात कर रही हूं मैम, जिसमें एक साल में भी चार्जशीट फाइल नहीं होते, और विद इन 6 month में ट्रायल कोर्ट को जजमेंट देना होता है. लेकिन अगर हम एनसीआरबी का डेटा उठा करके देखेंगे तो कन्विक्शन रेट हमारी कंट्री में 30% है आउट ऑफ 100. तो जो 70% एक्यूज्ड हैं वो कहां हैं? वो हम सबके बीच फेयरलेस होकर के घूम रहे, लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं. पॉलिटिशियन आते हैं, नो डाउट. आज ही की मैं बात बता रही हूं, जब से मुझे आपके चैनल पे बताया गया कि डिबेट में आना है, मैंने महाकाल थाने उज्जैन में कम से कम 10 कॉल्स किए हैं इस चीज का अपडेट लेने के लिए कि आखिर इस चीज की जो आयु है कविता जी वो मुझे बताएं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा. उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है लगातार.
कैसे अगर हम लोग भी जाकर के इसमें इनिशिएटिव लें कि ये चीजें जल्दी से हों, तो कोई रिस्पांस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस देश के अंदर, ना पुलिस की, ना जुडिशरी की, ना पॉलिटिशियन की। और एक्यूज को अगर आप उसका एनकाउंटर कर देते, वो सॉल्यूशन नहीं है, अब वो रिएक्शनरी एक्शन है, लेकिन सॉल्यूशन कहां है मैम? निर्भया केस में अगर हम देखें, मारिया जी, आप लोगों ने कवर किया था इस केस को। जब निर्भया के साथ ये क्राइम हुआ, पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, विदेश में भी प्रोटेस्ट हुए, फिर भी 7 ईयर लगा। इसमें नेग्लिजेंसी किसकी थी? 9 मंथ में ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड किया, 3 मंथ में दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। मारिया जी, 17 महीने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारा केस पेंडिंग था। ये लगातार मेंशनिंग, लगातार लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन मूव करनी पड़ी। 17 महीने बाद अगर मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिस्ट हो रहा है, तो आप समझिए कि जब वहां पर ये मैटर एसएलपी में सुना गया, तो उसमें कितना टाइम लगा, और 7 ईयर 3 मंथ्स लग गया। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जब तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी, रिजल्ट्स पॉजिटिव हम लोगों को नहीं मिलेंगे। और ये टाइम फ्रेम होना चाहिए यशवर्धन आजाद, कोई टाइमलाइन की बात होनी चाहिए, that it cannot be about mere lip service, that politicians can come and the cameras are on. Yes, Seema. मारिया जी, अभी मैंने कहा कि पोक्सो एक्ट में ये प्रोविजन है कि विद इन 2 मंथ चार्जशीट फाइल करनी है, और विद इन 6 मंथ में आपको जजमेंट देना है, ट्रायल कोर्ट से डिसाइड करना है, ट्रायल कंप्लीट करना है। ये टाइम प्रिस्क्राइब है, बट इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना जजेज की है, ना पुलिस की है। ना पुलिस 2 मंथ्स में चार्जशीट फाइल कर रही है, ना जजेज 6 मंथ्स में वर्डिक्ट दे रहे हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के साथ साथ क्या ऐसा भी कोई प्रोविजन किया जा सकता है कि जिसमें इन लोगों के अगेंस्ट भी कुछ कार्रवाई की जाए? ये तो सही सवाल है। बिल्कुल, यशवर्धन आजाद। In the case of Nirbhay, I wish Seema ji would have talked about the efficiency of the police with which it put up the charge sheet and how they did a wonderful investigation. So I don't think we should generally blame the police and the entire judiciary. Yes, the system is bad. There is no doubt about it. Absolutely, I agree with you. Now, the first point I want to say, Marya, let's go back to our original piece, then I'll come to this. Yes. The first thing is that about this girl, I would hold the collector, SP, commissioner, DIG of that particular area, Ujjain, who did not pay any attention to this girl after the state government and the chief minister himself had announced some measures and had talked about the case. You know, there is a lot which can be done by these people, even if they are busy, but they are the key members in a district administration who have unfortunately turned their, attention away from this girl. As far as the cases are concerned, the new criminal justice system is trying to address the timeline, but it's very, very difficult. It is going to be a huge problem. There is also an attempt at digitization, but that is a huge issue again. For important issues like this, I think there should be shortcut methods, and especially in a case where a girl has been raped. And I totally agree with you. The state government has failed, and even the judiciary fails at times when it goes beyond 7 years or 17 years. There are cases which are coming out after even 2 decades. That is a very, very serious problem to address. Yes, the chief minister made an announcement, but somebody has to ensure that the help reaches this family. Who will ensure that? Absolutely. There are agencies. You have the Women and Child Development Ministry. You have various organizations in the government who are supposed to do it. The collector is supposed to ensure that compensation reaches them on time, medical facilities are given on time. And when you talk of police apathy or not acting like, in fact, the Criminal Amendment Act talked of 166A of the IPC was added, that whoever, a police officer, if he does not register an FIR, he himself can be put behind bars for up to 2 years. So we have that provision, but I think seldom is that provision acted upon. I have never come across a cop behind bars for not registering a FIR. So accountability definitely lacks. Compensation also, in fact, it's horrifying that these compensation, these allotments which is done for funds for rape cases, they are surrendered.
There are states which don't use that money. So it rolls over to the next budget. So accountability needs to be fixed. The money should be given. But above all is the mental health, the therapy. Why this child is not being given any mental health therapies, and why nobody's coming forward. So I think that, when the media comes, suddenly everything comes, which is very true. But later on, nobody's bothered. And not only that, we don't even have a victim protection program. We don't have witness protection program. They're all on paper. Tomorrow when this child comes to depose, or there are witnesses who come to depose, they'll be threatened. And that is why they turn hostile, and conviction is almost negligible. 30% conviction in rape cases is a mockery of the law. So I think a lot needs to be done. But I'm glad, Marya, that channels like you, anchors like you, are pursuing this case. For you, it's just not a matter of TRP. Yes. At least you feel for it. Because there is something called going beyond outrage. I'm trying to understand, because that day we talked about who's the accused. Today it is about rehabilitation. And here is a rape survivor whose rehabilitation has to be discussed, whose future has to be planned. And that is not happening. गुड़िया के अंकल के पास फिर से आऊंगी. मुझे बताएं आप, उस बच्ची को किस तरह की मदद मिली थी? मिली थी जैसे उस टाइम स्पीकर थी मीरा कुमार जी, उन्होंने 2 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया था. इसके बाद बीजेपी का नेता थे विजय गोयल जी, जो दिल्ली के अध्यक्ष थे, उन्होंने 50,000 रुपये दिया था. यानी कि बहुत लोगों ने मदद भी की थी, खास करके प्रेस के लोगों ने बहुत बड़ी मदद की थी. अगर प्रेस नहीं होता तो शायद आज वो बच्ची जिंदा नहीं होती हो. तो कोई भी प्रेस वाले, सब प्रेस वाले ने बहुत अच्छे से उन्हें दिखाया, और उनकी जब तक ठीक नहीं हुई, जब तक उनके पीछे लगा रहा और उनकी इलाज करवाया गया. मदद करने वाले बहुत, बचपन बचाओ आंदोलन वाले ने करा, परी NGO से योगिता जी है, उन्होंने काफ़ी सारी, यानी कि साथ में गए हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, हर जगह से उन्होंने सपोर्ट किया. बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया. लेकिन सब प्रेस में आने के बाद ही क्यों होता है? अगर बंद कैमरे में अगर कोई नहीं सपोर्ट कर सकता क्या? वही सवाल है, बंद कैमरे में कोई नहीं सपोर्ट कर सकता क्या? आई हैव जस्ट इनफ टाइम फॉर फाइनल कमेंट्स फ्रॉम सीमा एंड यशवर्धन आजाद. सीमा, बंद कैमरा रहे तब सपोर्ट क्यों नहीं आता? रिहेबिलिटेशन की अगर बात करें मैम, देखिए अभी जो गुड़िया के फादर ने बताया, कोई पॉलिटिशियन को किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. ये कोई सिंपैथी वाला काम नहीं है. यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब लॉ है उसके अकॉर्डिंगली, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंगली कोर्ट क्यों नहीं डायरेक्शन देती है, पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती है? जब रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन है पोक्सो एक्ट में या रेप लॉ में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, जैसे कि अभी मैम ने भी बताया कि 4 लाख से कम नहीं दिया जाएगा. इवन की पोक्सो एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर बच्ची को रिहेबिलिटेट करना है, उसका मेडिकल कंडीशन, उसकी एजुकेशन, टाइम टू टाइम ट्रायल कोर्ट इसको देता रहेगा, उसमें डायरेक्शन देता रहेगा, ऑर्डर करता रहेगा. और ये अलग से सिंपैथी लेने के लिए कोई आकर के कि इस पॉलिटिशियन ने 50,000, ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए मैम. ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से कभी कभी क्या होता है, अगर लॉ में लिखा है 4 लाख यशवर्धन आजाद, तो उस बच्ची की अभी तक मदद क्यों नहीं की गई है? 1500 रुपए उसको मिला है क्योंकि लोकल लीडर ने बोला कि दे दिया जाए. इस तरह से मतलब ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का. मारिया जी, मैं एक चीज मैं बोलूंगी. मेरे पास एक केस है, 3 लोगों ने गैंग रेप किया एक बच्ची का. उस बच्ची की मेडिकल कंडीशन भी खराब है, लेकिन कोर्ट में चूंकि पुलिस ठीक से चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, वो बच्ची, ये कंडीशन है उसकी कि वो बच्ची मेंटल ट्रॉमा में चली गई, उसको कोई सपोर्ट नहीं. इस केस की भी मैं बात कर रही हूँ. इनके पास मैम कोर्ट जाने के लिए पैसे नहीं होंगे. You are among those lawyers who has fought for minors and have fought relentlessly for rape survivors and rape victims. So please continue to do that work. Abba Singh, Yashwardhan Azad and Guriya's uncle, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. The question is, can we go beyond mere lip service? Why is it that once the accused is identified, we forget about the survivor? We say law will take its own course.
and justice will be delivered. But it is usually delayed justice. What about the survivor? In this case, a 14-year-old with her entire life from school to beyond ahead of her. When and how will we start putting her first? That's the change we need to see. Should the society that let her down leave her now to fend for herself? Should the government, which was responsible for her safety and security, now offer quick fix promises without delivery? Accountability, as we keep seeking, where should it begin and end? And let us all understand that the real struggle begins when the cameras move away and when the candlelight marches abandon the cause. Think about it.